You can follow me, or I can send you a link. You can install on your own luxury. Those who don't have installed Docker. So let me share my screen. Is my screen visible? Just type 1 because I will not able to see your thumbs up now. Okay, great. So what you're gonna do is uh, Docker desktop for Windows. Uh, it is almost similar in case of Docker, installing Docker on Windows and MacBook. We will cover all the scenarios. So I will just share this link with all of you. This is the link you have to go for Docker. Docker desktop actually simplifies a lot for us. And when it generally saying when something is simplified for you, that means you are looking at very abstract level. So what we're gonna do is we need to first understand what are the uh, options that Docker is giving us, and then we need to have some high level understanding what does it actually mean for us, right? So there are three flavors you can see: Docker desktop, Windows x86 64. This is something an app based, and this is something for ARM based. So if you are working on the laptop, which does not have Intel Atom processor, uh, in that case you should ideally select this. But just to be completely clear or fully confident, in that case, what you need to do is you need to go in the system and see your computer architecture. So uh, I have 64-bit operating system and x64-bit processor. This is something you need to see, you need to focus on. In case if you see ARM-based processor, because well, let me start zoom it. So in computer architecture, there are specifically two types of instruction sets. One is CISC and the other is RISC. This is a complex instruction set computing, and this is reduced instruction set computing. These are the nothing but the architecture. So these instruction set decide the architecture for your microprocessor. So mostly desktop laptops fall under this category, and your mobile or battery optimized laptops will fall into this category. So if you see Intel Atom processor, then it's a ARM based, which is advanced RISC machine, and then this is more of your Intel and AMD x86, x64 based architecture. So based on your system, you need to choose it wisely. Now there are other flavors that Docker can offer, and this is something sometimes confusing or very confusing to understand. At least it was for me when I started working on. So if you have Windows Pro license or Windows Pro edition on your laptop, then you have this Hyper-V, which is a virtualization platform from Microsoft, which is installed on your OS. You need to basically turn it on. So basically, what we are going to do is we are going to run Linux workloads on Docker. So whatever we are going to do, we are going to learn Linux workloads, और for Linux workloads run करने के लिए वो Windows पे तो directly रन नहीं होंगे.
So there are two options. One is कि आपके पास Hyper-V based virtual machine होना चाहिए, या फिर आपके पास WSSL, which is WSL is Windows Subsystem for Linux. So if you don't have Windows Pro license or Windows Pro edition, then you can turn on the WSL2. Now the challenge is, in case if you haven't done this before already, that might ask you to restart your laptop. So I will show you how to turn that on, and I will strongly prefer to go this route because Docker Desktop has solid integration, or I will say seamless integration with the WSL2, which is Windows Subsystem for Linux. So what you need to do is, for that, turn Windows feature on or off. So you have to go into Windows features. For me, it is already turned on. Next time I should. So I have Windows 11 Pro, so I would be seeing this Hyper-V here. Rather, you might see this, but uh, you might not see Hyper-V platform, right? So where you can create a virtual machine. So I will be covering what is hypervisor and all in a moment. So this is something when you have Pro Pro edition for Windows 10 or Windows 11, whatever Windows platform you are working on, and then at the end, sorry, I have closed it by mistake. There should be Windows Subsystem somewhere over here. Yeah. So this guy should be enabled for you. What is whatever your choice, ideally you should restart the desktop or laptop once you tick mark this, right? So this is the pure requirement if you want to install Docker desktop. If you want to install Docker on Linux, then I would certainly suggest to dual boot your laptop or desktop, and that way you can install Ubuntu or whatever distribution you like. And if you don't want to continue on the route for dual boot, then there is Oracle VirtualBox where you can download the kernel from kernel.org, and then you can start installing Docker. Right. In the course, anyway, I get all these installation in detail for Linux as well. But since in the interest of time, we will focus on WSL2. These are the requirements. Uh, so you should also have enabled hardware virtualization from your BIOS. So while starting the laptop, you can just press delete or F2, and then you will able to see uh, Intel. In Intel, it's a VTX extension. That is something you need to turn on for virtualization, and then basically then you can start installing Docker on Windows. So let's get. I'm going to select this one, Docker Desktop for Windows. I will say yes. Save. So depending on your OS, either you should go for this or you should go for this. It's almost done, I guess. Yes. So since we have this exe, just a quick check. Uh, just type 2 in the chat box if any one of you following this installation. Literally any. So sometimes laptop also have. You will find most laptops x64 bit. So just check your system
right click on your this Windows icon, check your system, and if you see 64-bit architecture, then you should go for the choice I have made, right? And if anyone of you see ARM based, then you should go for the early access one. So I will just need a poll. Okay, so I'm working on desktop. So I have pretty high-end configuration machine, X64-bit, 12th generation Intel i9 processor and RTX 3080 GPU. So it should be still okay. 10 years old means you are from 2016. So just see if you have updated Windows 10 or 11, because there is certain version number. If I'm not if I'm if I'm not incorrect, then this is the version number one should have in Windows 1809. So if you have Windows 10 1809 and above, you should be able to install Docker Desktop for you. Yeah. Uh, I just need one poll, guys, from all of you. Type 2 if you are going to follow along for the installation, so that I can wait if you have already downloaded. Yeah, I know usually for you and Guru, you have already installed Docker. I'm just asking the rest of the audience if whether should I wait for them or I should continue. Just give a or type 2 into the chat box so that I would know that I need to wait for you on. Otherwise, no response means I would continue. Okay, Pratik, sure, Pratik, I will. So, Pratik, have you downloaded the installation file for you? Okay, great. Right. So, let's get started. I will share it again. So I will double click on this. Say run. Nothing fancy. It will just a bunch of few clicks. You will need your email because in Docker there is a concept called registry, and for that you need to log into Docker registry, which is hub.docker.com. So we'll focus on few points. Uh, you can check this checkbox if you are interested in running Windows containers. Just to clarify, in case if you are interested in joining the batch, uh, we are not going to cover Windows containers, and that's the reason I will leave this unchecked. But if you are planning to work on your own or explore on your own how to containerize Windows-based application, then do ensure check or check this checkbox. So I will continue with this default configuration, and even Docker is also recommending use WSL2 instead of Hyper-V. I will say yes, and that's it. It will start unpacking the files and it will install Docker. Okay, so Docker is successful. We have to go into Docker Desktop, and then it will ask you for sign up for login. So you have to accept this Docker subscription service agreement. So in Docker, there are two main editions. One is Docker Community Edition and Docker Enterprise Edition. So if you are working, so mostly as a student, we are working as a experimental or for some demo projects. So Docker Community Edition is free. We don't have to pay anything. Docker Enterprise, I guess, either it's a 2 weeks or 1 month free trial, and then they will charge you. So accept. And here, depending on your email, ideally you should go for personal. If you go for your work email address, then
you have to consult with your company whether they have Docker Enterprise Edition agreement or not, because that is very pretty much important step. When you work for a company, then you should have Docker Enterprise Edition. You can skip this as well for now, but since anyway, in case if you are gonna join the course, you would need to sign up for Docker so that you can push your code into the registry. You can create your images, you can build your image, and to share your images with your colleagues or your friends, then you would certainly need the Docker account access. So I have already created an account, so I will use my Gmail. In your case, you have to sign up for it. And if you see this window, that means your Docker is perfectly set up. So ideally, if you see there is, at least from Windows and Mac perspective, literally there is nothing we need to do, right? We just need to download exe and just next, right? So, but in the background, what happened in the background by the Docker, that is something very important architecture to understand, right? And most of the videos that I have saw, they didn't cover enough Docker desktop architecture. So it would be a pretty good starting point for us to understand what is actually happened when you downloaded Docker desktop and started running the containers. Okay. So first, what we'll do, we will test whether my setup is exactly as per what Docker is suggesting. So what we'll do, you just need to start. Uh, Before that, I will just wait and will ask Pratik, have you done with the installation? Because you type to, so I will wait for you. Because for me, WSL is already turned on. So, okay, great. So you are able to see this window for yourself. Here you can see Docker engine is running. Okay, great. So what we will do is we will just first quickly check installation, and for that you need to go into the terminal. You can go any terminal, doesn't matter, any command prompt that you like, and you need to type Docker run hello world. I will anyway copy paste the command into the chat box. So ideally, it should print hello world. You can safely ignore this because I haven't covered Docker images. It's too early right now to cover that. This is the message you should get. So basically, by running hello world image, what you get is a high level what Docker is all about, and then how you can automate your workflows, how you can share with your friends or colleagues. And for this reason, for sharing the images, for the same key reason, what we have did is we have signed up with the hub.docker.com. So I will not going to bombard with you that there are a lot of image registries and all. Today is we'll keep very light. We'll just first get the feel of Docker, and then we will dive a very key point, and then we will go more deep into, or maybe have some more insight into the what this Docker desktop is all about. Okay, so what we are going to do is we are going to do a sample project. Rather, I should not say what that we are going to do. We are going to execute a sample project because there are a lot of samples. You can go here. Even Awesome Docker. There is a repo called Awesome Docker. You can go through it. This is something a very famous application. In most of the tutorials, they cover this application.
So what we're gonna do? We're gonna do the same. We will going to clone this application and we will going to run this application into the container. Okay. But before I do that, I have one more question. So the command you need to type is this, provided you all have Git installed on your local machine. Okay. But before you do that, I need few responses that do you have in your system, do you have, is someone sharing the screen? Okay, it's not. Okay. In your system, do you have either one Redis or Python or .NET or any database? Anything do you have installed on your system? In Patch means okay, Python. So I assume Yashudip, you don't have .NET. Okay. Uh, please don't install anything at all. ऐसा कोई है इनमें से एक भी आपके पास नहीं है, रेडिस नहीं है, पाइथन नहीं है, .NET नहीं है और डेटाबेस नहीं है. ओके ग्रेट गुड. सो बट ऐसा कोई है कि जिसके पास कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, नॉट इवन पाइथन, .NEट, रेडिस, पोस्टग्रेस. इन डेटाबेस, शारदा, which database you have installed? I need someone who doesn't have anything installed. कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, ऐसा कोई है? एटलीस्ट पाइथन, .NEट, पोस्टग्रेस एंड रेडिस, इन चारों में से कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, ऐसा कोई है? और नोड एज वेल. ठीक है, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके. ये सब ठीक है, ऑल गुड, नो वरीज. एटलीस्ट आप सबके पास कुछ ना कुछ लैकिंग है, राइट? एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबके पास कुछ ना कुछ लैकिंग है जो सॉफ्टवेयर में आपको पूछ रहा है, जो एसडी के बारे में आपको पूछ रहा है, राइट? सो आई विल जस्ट पेस्ट इट अगेन in case due to lot of comments the command might has gone up. So you need to fire this command provided you have git installed. So go to any directory of your choice and fire this command. I will be sure anyway. I'm going to show you this. So I'm in my home folder and I'm going to type git clone. So what we are doing is we are downloading the existing code base that is provided by Docker, right? So uh, calling it as a mini project would not suffice because we are not building anything, right? We are not going to build anything. We are just copy pasting or downloading it from the Docker sample. That is not going to happen in our course. We are at least building some Hello World projects or a basic static application, some sort of application. But for now, in the interest of time, just download this, okay? It's very small, I guess around 1.21 MB. Sorry, total is 16 MB. So what you need to do, you need to go into that directory, which is example voting app. I will again wait. Just a quick question. How many of you are just following practically? Just type one if you are following. Just type one. Okay, great. Aditya Pratik. That's good amount of public. Good. Okay. सबका ये क्लोन हुआ है एप्लीकेशन. Have we cloned? Type 2 if you done with the cloning this application in progress. No worries, I will wait. Okay, good. Those who have Linux वर केलं तर चालेल का? Yes, विनायक, Linux पे आप कर सकते हो. For Linux, there is a altogether different process. That is something I generally cover into the course. But yes, if you are comfortable by following Linux documentation, good to go.
Docker is cross-platform, so it will work exactly the same. Rather, once we complete this application, running this application, I'm going to anyway explain what Docker Desktop did. Okay, so the Hello World Docker that we have run, it is also run on Linux machine, not on Windows machine. We will cover that detail in later. Okay, so those who are going uh, to do this application live, I believe all of you have commented too. So let's get started. Just those who have joined pretty late, what we have did is just to call out, we have first installed Docker Desktop for Windows based on your Windows system architecture. So if your architecture is 64-bit, you need to select 64-bit, and the flavor of Docker Desktop we have choose is WSL. So most of you have Windows laptop. If you have Windows laptop with Pro Edition, you can also try Hyper-V. But if you don't have, in that case, just turn on your WSL, which is Windows Subsystem for Linux. You can turn it on by going through turn turn Windows feature on or off. So if you scroll down here, you will see Windows Subsystem for Linux. This is what you have to turn on. You should restart your computer whenever you change in the settings or features of Windows. This is something we have done so far, and then we have downloaded this code repo. Again, this code repo is not mine. This is provided by Docker samples. So we are quite authentic repo we are in. We are going to see the application now. So I will just open this folder. Where I did, okay, example voting app. So I need to go into example voting app. So here it is. I will zoom in a bit. There are I would say multiple applications. So this entire solution is built on top of uh, front end, back end, and database system. So let me show you the diagram. So this is the diagram or high level architecture of the application. This is the user. What user gonna do is user gonna vote on the application, and after voting, he or she gonna look out for the result. Now, if you see the icons on the edge of every boxes, vote application. Vote is a application created into the Python language. Then worker, which is a background worker job, it is created in a .NET. Then for the state management, we have Redis. And for database, we have PostgreSQL. This elephant sign is a Postgres. And for result, to look at the voting result, this is a Node. So Node.js application. And that's the reason I have asked you, ki, do any one of you have either all of these or none of these? Doesn't matter. Even if you have Python, that's completely okay. But the question we should be asking is that if I need to run this application on my local machine, in that case, what you're gonna need is you need to download Python, then you need to download .NET. Depending on whether you're gonna build that application, then you need SDK, and if you are not building an application, then you would need runtime. So every not I would say, not I would say every, but those those languages which have compilers, right? So all the compiled languages have two flavors. One is SDK to build the application, and if you don't want to build, if you just want to host the application in that specific language, then you just need runtime, right?
So those who have background from Java, generally you might face such interview question. If you would like to run the Java application, would you really need JDK? And the answer is no, right? JRE is JRE is more than enough. But yes, if you want to build application in Java, then you will need Java development kit, right? And similarly is for .NET as well. If you want to create application based on .NET, you will need .NET SDK. And if you just want to host application with .NET runtime, then you need runtime of .NET, which is CLR. Since none of us have this installed, right? Ideally, our application should not work, right? Let's see what Docker has to offer, what magic Docker does. And so when I conduct batch, this is basically towards end I cover this part. So जब batch खत्म होते आती है, तब I explain this end to end what is happening behind the scene. But this time I chosen deliberately a different approach. See the magic and then get the feel of Docker, what we are actually looking into it, what we are going to experience in the Docker batch, and then we will revisit the drawing board. We will get into the nuances of operating system, nuances of virtualization, nuances of Docker networking, and so on and so forth, right? So today is more of a just enjoy what Docker is capable of and why the top enterprises have chosen Docker as their de facto standard for application packaging. Okay. So if by going through architecture, you can relate this vote is all about the voting application. The worker is a background job, and then result is your application. So ideally, you should ask where is the Redis and where is the database, right? So those are softwares, and those are just, I would say, uh, not taking any integral part of development, right? So as long as you have result, vote, and worker, why? Because these three are the code base. So ideally, if you would like to extend this application, you can modify either interface for Python or result, or if you would like to enhance, then you can modify these three things, right? And the rest two, which is Redis and Postgres, are just dependencies. For one is for your state management, and another is actually storing the persistent state. So Redis will have managing your session state or intermediate state or cache, you can say. We are not going to look into the architecture right now, why it is like this, why Redis has there, right? I don't want to complicate those who are just hearing Docker word first time, right? But from this diagram, at least we know that there is a person who is accessing vote application for voting, and after voting, it is he or she is going to check that what he or she has voted as a result into the result application. Please remember, to run this application, you will need Python. To run this application, you will Node.js. To run this application, you will need .NET. And if you want to run this end-to-end, there are certain aspects of softwares that are taking participate into this architecture, which are nothing but a database where data is written, and the intermediary, which is a Redis cache, right? What Redis is, let's forget right now. We are not bothered about how this code is implemented, right? So with that, what we need to do? If you can see, there is a file called Docker Compose. What is Docker Compose? Again, we don't want to even look at. We don't want to even understand, right? For now, what we are interested into is I have done my Docker installation setup up to the mark, 100% done. I have verified that Docker setup by typing
Docker and Hello World. It is also working perfectly fine. Done, tick mark. Third, I am going to run this application. And what the only thing I should understand in this context is that to run this application, all these components should be up and running, right? And I just, as per the poll, we have just checked that few of you have Python on your system. Might be some of you have Node into the system. Might be some of you have either .NET in the system, right? But none of you have all these softwares on your system, right? And let's see, if we don't install this software, are we still able to run those applications and do the voting? Okay. So what we need to do is we need to just type a simple command. I'm going to type it and then I will put it into the chat box. So what we need to do is we need to type docker compose up, right? We don't understand this command at the moment and we don't need to, right? Take this as a grammar. Just we need to follow something, right? हम ऐसा बहुत बार करते हैं, ये टाइप करो आंसर आ जाएगा, राइट? तो वैसे ही करना है अभी. लेट कीप इट लाइट just to see the magic of Docker. I will put this into the chat box. It will gonna take time, so I will start running now. You also should start running it. What it is doing shouldn't be our concern, right? Our concern is whether this application is going to run or not. And then that is something our Sherlock Holmes project. If I didn't install any of the runtime, any of the SDKs, how come that end-to-end system, generally we can call it system, how come this voting system is up and running? That is something we need to ask. Okay. Okay, so it is continuously printing some log. Okay, so let's see whether it is working it or not. How we should know it is working? What we need to do is we need to go on our local host and type port number 8080. Why port number 8080? Take it granted for now, okay? Because it takes 3 months to come to this level with proper understanding what is happening behind the scenes. So for now, just enjoy, right? Like all of you, I also don't have Python, Redis. I have Python installed. I have Python. I have .NET and Node as well. But I don't have Redis and database. Like I don't have Postgres and database on my machine. But still, I am able to browse this application. Okay. How many of you are with me so far? Just type 3 in the chat box. If you are able to see this application up and running on port number localhost 8080. Just type 3. In case if you are facing any issues, happy to look into those as well. Okay, great. So Sujal is able to see the application. I know depending on your network, it will take some time to up and run, right? So you have to browse to localhost port number 8080. There is no commands at all. There is only one command. You need to go into the repository, zip, and type docker compose up. That's the only single command we need to fire. Nothing else. Only one command. That's it. After cloning, you have to go inside the repo
and you just need to fire Docker Compose up. That's it, nothing else. Take this as a grammar और handwriting, शुद्ध लेखन जैसा इसको लेना है. बट एक क्वेश्चन, ये पूरा आज का सेशन में से एक क्वेश्चन सामने आना चाहिए कि अगर if if I have to do this on my own, right? If I have to do this on my own, bare minimum, I would need Redis, Postgres, .NET, Python, and Node.js. And even without installing all of them, I'm still able to run the application on my local host. सबको क्वेश्चन समझा है क्या? ये जो मैंने अभी बोला है वो सबको समझा है क्या? यस. कि विदाउट इंस्टॉलिंग एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी, एनी ऑफ द SDK, एनी ऑफ द रन टाइम, या ऑल ऑफ द, मे बी नॉट एनी ऑफ द वर्ड इज नॉट गुड, हमने बिना .NET या पाइथन या Node.js या रेडिस या डेटाबेस, पोस्ट डेटाबेस, ये इंस्टॉल किए बिना आइडियल सिचुएशन में ये रन होना नामुमकिन है, राइट? यू नीड ऑल these systems to work together. तो ये वोटिंग जो सिस्टम है ये रन नहीं होनी चाहिए, राइट? बट जस्ट राइटिंग डॉकर कंपोज अप, okay, you have some challenges with the mm, okay, DBU, uh, ठीक है, we'll look into that later. uh, Need some more configuration for you. Ideally it should not happen. That's fine. बस बाकी किसी को ये एरर आया है क्या? मे बी इंस्टॉलेशन का भी इशू हो सकता है इशू. I would suggest if you can just uninstall and run. It's all about the version, because I'm not sure when you have installed a Docker. That is one of the challenge we can face if you are on version mismatch. So ये सबको समझ में आया है, right? कि without any installation of any software, I have able to run on the my local machine, and this should be our quest. This should be our journey. कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या हुआ है बैकग्राउंड में कि जो मुझे ना पाइथन, ना .NET, ना Node.js, ना डेटाबेस, ना रेडिस, ये बिना इंस्टॉल किए ये सिस्टम प्रॉपरली चल रही है, और सिर्फ चल नहीं रही. व्हाट इफ आई डू, राइट? इफ many of you already tried it. If I vote on cat, now the vote becomes 100% to cat. If I vote on dog, the vote goes to 100%, right? So even it is working as well, right? तो फिर ऐसा क्या हुआ है, राइट? तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट, आज जो भी हुआ है ये एप्लीकेशन रन करने का, ये हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा कि ठीक है, ऐसा हमने डे 1 को रन किया था, वेयर एप्लीकेशन रन सक्सेसफुली, इवन वी ट्राइड एग्जीक्यूटिंग और फायरिंग द पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन दैट एप्लीकेशन. तो ये प्रॉपरली हुआ है. ये कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रखते हुए नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड फर्स्ट डॉकर इंस्टॉलेशन जब मैंने किया तो एक्चुअल में क्या क्या हुआ है सिस्टम, राइट? यस, शुड वी गो? यस, ऑल गुड सो फार. एनी क्वेश्चन? Okay, I will take that no question. So what you need to do is now, let's stop this application by typing Control C. Okay, so by typing Control C, application is now stopped. How to verify? Let's go and refresh again.
Now it is unreachable. Okay. So Docker has stopped all the application, and then you need to type the command. I will again put it to the chat box. Docker compose down. But before firing this command, okay, don't fire it straight away. You will see the stop icon in for your container. So this is the, if you go to Docker desktop, you will see your app over here. It is now in stop state because we have typed Docker compose. We have typed Control C. Sorry, we have not typed Docker compose. We have typed Control C, right? So what we are gonna do is now we need to properly clean this up. So to clean this up, what we need to do is Docker compose down, and then this is properly remove the containers. And once you type that, you will see from here all those containers are gone. Okay. So now execute Docker compose down and see yourself that all those containers are removed from Docker desktop as well. Type 4 if you are able to remove all the containers. Right. सबका हुआ है जो जिन्होंने ये ट्राई किया है डॉकर कंपोज अप डॉकर कंपोज डाउन, प्लीज चेक योर डॉकर डेस्कटॉप and see you should not have any container left after running docker compose down. अगर ये सबका चल रहा है एटलीस्ट जो फॉलो कर रहे हैं, then press 4 into the chat box. Okay, Pratik. I will wait for a few more responses. Okay, Sujal, great. बस दो लोगों ने किया है, विनायक, I guess few of प्रतीक, सुजल. ओके, ठीक है. Rest of you are facing any challenges? यशदीप का I can understand. बाकी के लोगों का हाँ ठीक है, विनायक का हरकत नहीं. ओके, ऑल गुड. बहुत लोग, सारे लोगों ने दो दिया था, बाद में तीन, तीन के लिए दो. ठीक है, फाइन. एटलीस्ट वी हैव टू. सिस्टम हैंग होता है प्रीतेश. ओके, आइडली हैंग नहीं वाला भाई जी. No worries, Sharda, all good. Anyway, there would be recording of this session. You can install Docker and try the commands yourself, right? So let's get into the architectural part. What actually happened when we run Docker compose up? Okay. So this is for this time. I have specifically taken the completely different approach कि जो हम एंड में करने वाले हैं कोर्स के, वो हम डे वन पे कर रहे हैं, जस्ट टू गेट फील की कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना मेरा एप्लीकेशन प्रॉपरली रन होगा. ठीक है. सो लेट्स नाउ गो इनटू द इंस्टॉलेशन पार्ट. एक्चुअल में हुआ क्या है जब मैंने डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल की. ठीक है. या ये क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए थे कि डॉकर ने कहा है WSL इंस्टॉल करो, या डॉकर ने कहा है कि हाइपर भी लगेगा, इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी, राइट? सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू लुक इनटू. सो first, let's draw this black box. This black box for you is Docker desktop, right?
So you give command to it, and it will give you the output by setting up your system. Okay. इसका मतलब क्या है कि somewhere with my input, Docker has take, taken the responsibility of installing all the necessary or required software, number one. Number two, configuring them like their path, environment variables, right? Third, taking consideration of port, right? हमने अभी Python application run किया and Python application started running on port number 8080 and जो Node.js वाला application था, it is started on running 8081. And the best part is ये सब करने के लिए हमें कुछ भी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं पड़ा. जस्ट अ सिंपल कमांड कॉल्ड docker compose up, and then all the required software, their configuration, their dependencies, सारी चीजें कॉन्फ़िगर होके I have got my application up and running, right? So now it's time to unwrap or uncover what is actually this guy hiding behind the scene, right? So सबसे पहले कुछ important topics लेंगे. I don't know how much time we can cover, how much things we can cover today, but that's completely okay. Uh, so what are the dependencies? We have WSL or Hyper-V. These two are the dependencies or essential or prerequisite that Docker desktop has called out, right? So again, we'll go back to installations part. See, in fact, in WSL, it has mentioned specifically and categorically WSL version 2 and above. And if you click on this tab, look at this. That's what I was saying. Either you have Pro, Education, or Enterprise. If either one of you have, then only you will have this Hyper-V backend available for you, right? So anyway, we are going to look into this part. Why? Because we have installed Docker Desktop using WSL2, right? Now, when we have enabled WSL2, what happened, right? That is very important. Windows has created, Windows operating system created a small micro virtual machine. This is the very first step happened for you. Windows operating system created a small micro virtual machine, right? This is has been done when you have enabled WSL for USL. Then you will write a flow. Then Docker desktop. तो ये कब हुआ? जब आपने WSL2 ये टर्न ऑन किया है तब, या WSL टर्न ऑन किया है तब, फ्रॉम द विंडोज फीचर्स, राइट? अभी वर्चुअल मशीन को क्या लगता है? Any virtual machine you would need image of an operating system, right? For any virtual machine you would require image of operating system. Yes. So Docker desktop, when you installed Docker desktop, there are few things also happen. Docker has
Sorry, not this. This is very important step. Docker downloaded. A Docker might have, right, either downloaded or have Docker desktop distro. Now, distro is what? And a customized flavor of Linux kernel, right? So Ubuntu is a distro, Red Hat is a distro, Debian is a distro, right? But when I say Linux, when you say Linux, Linux is a kernel, okay? But when you say Ubuntu, Ubuntu is a distro of that Linux kernel, right? So Docker desktop distro on top of Ubuntu operating system image from Microsoft. So अगर आपको देखना है, I will start WSL. So terminal में, if you can see, I will show you. My bad. ये ड्रॉप डाउन होता है. इस ड्रॉप डाउन में you might not have this option. वो कैसे करते हैं? Well, again, I am going to take this later. जब मैंने Ubuntu टाइप किया, straight away I get into this shell, which is, you can say, SSH. The moment I have select drop down and Ubuntu, if you don't have, don't panic. If you don't have this, that's completely okay. Okay? What I would like to show you is, this is very much important. This is the kernel version, and look at this Microsoft Standard WSL2. So ये Ubuntu नाम के डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज किया है बाय माइक्रोसॉफ्ट. तो Microsoft has optimized it or installed some additional features on top of Ubuntu, and that's why this is created by, or rather, this is very much optimized for WSL2. WSL2 long form, Windows Subsystem for Linux. How many of you are from RTR or Windev? Just type 5 if you are from RTR or Windows. Okay, at least we have, okay, Windev, good. So those who have from RTR or Windev, for sure they have came across this command. You generally, okay, let me zoom in a bit. You generally type, for linking, you type link command, and then you give some kind of OBJ file, right? And then you mention one flag called subsystem Windows. जो लोगों ने विंडोव किया है या आरटीआर किया है, उन लोगों को फॉर श्योर ये फ्लैग समझ में आया होगा. Those who didn't, please kindly ignore. I'm just giving some additional information. That's the reason. ये जिन लोगों ने किया है उनके लिए पूछ रहा हूँ. Have you seen such kind of flag? That's right. So subsystem Windows, right? So थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे. 27th July 1993 was a pivotal moment for Microsoft because they have launched first ever uh, multitasking, multi-threading operating system or multi-user Windows NT.
WinNT. And at that time, the marketing or branding of Microsoft OS was completely on the narrative that they have set up is कि Windows NT is a Unix killer operating system. Unix killer operating system. जब NT ने लॉन्च किया था तब, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि विंडोज का जो विंडोज NT का कर्नल है इज वेरी मच फ्लेक्सिबल. दे हैव रियली रिटन अ प्रीटी गुड प्रोडक्ट एट दैट टाइम. तो विंडोज एनटी के कर्नल में यू हैव अ सबसिस्टम्स और मॉड्यूल्स ऑफ OS by 2, which is an IBM operating system, then Unix and Windows. So जब आप सबसिस्टम बोलते हो, right, then you are basically telling Microsoft that you are interested in graphical applications of this submodule. So there are multiple subsystems: Windows, OS by 2, I guess UWX or UWA or Unix, and then console is also a subsystem जहाँ पे only आपको terminal का access मिलेगा for command line applications. So this capability has given by Windows NT, right? Over the period of time, so at that time, there was a pact between IBM and Microsoft, and that's the reason, ideally, IBM was going to create an operating system, and Windows would be just going to create applications on that operating system, like Microsoft Word and so on and so. So initially, Windows has been never been into the operating system business, right? They always purchase OS from someone else. Even DOS is also purchased, right? So pact ऐसा था कि IBM would create an OS, IBM will distribute OS, IBM will sell OS, and Windows will sell the applications on top of it. But जब Windows NT के पहले कुछ initial Windows आए थे 3.0, 3.1, उनका सक्सेस देख के Microsoft has background thread में they have started working on Windows NT version. And Windows NT लॉन्च होते वक्त उन्होंने इन दोनों सब मॉड्यूल्स को ऐड करके लॉन्च किया था, सो दैट डेवलपर्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू रन देयर टूल्स विदाउट एनी हेजिटेशन ऑन विंडोज. क्यों? क्योंकि तब डेवलपर्स जो थे वो ज्यादातर इधर IBM विच इज मेन फ्रॉम सिस्टम और फिर यूनिक्स, इन दोनों के ऊपर ही उनका ज्यादा टाइम स्पेंड हो. सो माइक्रोसॉफ्ट वांटेड टू pull that audience, the developer audience, into Windows, and they have done this by doing these submodules, right? This wasn't worked pretty well. It was a UWA, Unix application or Unix-based application on Windows. ऐसा कुछ था. ये उतना चला नहीं. OS by 2 को बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली IBM को टीच कर दिया जब उनको पता चला कि विंडोज इज बिकमिंग पॉपुलर. यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज भी IBM बहुत गलत थी. IBM ने क्या किया था? IBM ने यह कहा था कि अगर आपको मेरी OS चाहिए तो यू मस्ट यूज माय हार्डवेयर. जनरली ये अप्रोच किसका होता है? एप्पल का होता है ये अप्रोच, राइट? तो IBM का हार्डवेयर ऑलरेडी कॉस्टली, ताकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम दे वांटेड टू कंट्रोल. और यहाँ पे मतलब जो बोलते हैं कि विंडोज पॉपुलर हुई, बट विंडोज पॉपुलर क्यों हुई? विंडोज, व्हाट विंडोज डिड, ब्रिंग एनी हार्डवेयर, देयर इज नो वेंडर लॉक इन. IBM का ये ऐसा नहीं है. आप किसी भी PDP, डेक, इंटेल, कोई भी हार्डवेयर लेके आओ, विंडोज विल रन ऑन टॉप ऑफ इट. एंड दैट्स एक्चुअली हेल्प विंडोज टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? ये हम क्यों देख रहे हैं? देयर इज roots of Windows Subsystem WSL. The roots of WSL lies in these details. यहाँ तक सब लोग साथ में ये
इरेज हो जाएगा। आई मीन यहाँ तक सब लोग साथ में हैं, सबको समझ रहा है क्या चल रहा है। तो यस, आपके विंडोज एनटी में ये तीन सब मॉड्यूल्स थे तभी। यूनिक्स वाला एक था, एक ओएस बाय टू था ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम आईबीएम, और एक खुद का विंडोज का जीयूआई कॉल्ड विंडोज। इसीलिए जब आप कोई भी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन करते हो तो आप, ये रिकमेंडेड है कि यू आर प्रोवाइडिंग दिस सबसिस्टम फ्लैग। अगर आप ये नहीं देते हो तब भी चलने वाला है, बट इन दैट केस ओएस लोडर हैज टू वेरीफाई कि आपके प्रोग्राम में विनमेन है या नॉर्मल मेन फंक्शन, राइट? Are we good so far? Yes. Type 6, if you are comfortable so far. Any questions? Yes, no. अगर यहाँ तक सबको समझाए तो 6 टाइप करो चैट बॉक्स में। हेलो हेलो, ओके। रिपीट करना है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू फील आई शुड रिपीट दिस? अगर रिपीट करना है तो 5 टाइप करो वैसे। ओके, ठीक है, नो वरीज, विल रिपीट, राइट? सो जब विंडोज एनटी लॉन्च हुआ था, राइट, जब विंडोज एनटी लॉन्च हुआ था तब 3 सब मॉड्यूल्स ये ऐड किए थे माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडोज एनटी के पहले विंडोज 3.0 3.1 ऐसे भी लॉन्च हुए थे, और तब पैक्ट ऐसा होता आईबीएम के साथ में कि माइक्रोसॉफ्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च नहीं करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ये ओएस बाय टू, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ये दोनों मिलके ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, एंड माइक्रोसॉफ्ट विल आल्सो क्रिएट द सॉफ्टवेयर। अब माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा है, ऑफिस इज देयर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द एंटरप्राइज परस्पेक्टिव, राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम दोनों मिलके ओएस बाय टू पे काम कर रहे थे, बट आईबीएम को इस बात की भनक नहीं थी कि पैरेलली माइक्रोसॉफ्ट वर्किंग ऑन विंडोज एज वेल, राइट? तो विंडोज 3.0 और 3.1 के सक्सेस से माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिस्क लिया कि दे हैव लॉन्च दिस विंडोज एनटी, राइट? और यहाँ से आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट अलग हुए। अब, एंड दिस इज फॉर यूडब्ल्यू, यूनिक्स ऑन विंडोज एप्लीकेशंस, ऐसा कुछ तो भी है। तो ये बेसिकली विंडोज एनटी ने क्यों किया था कि अगर कोई यूजर आईबीएम के ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरे पास होता है, या अगर कोई यूजर यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के फैमिलियरिटी से मेरे पास होता है, तो दे शुड नॉट फील अलोन, दे शुड नॉट फील आइसोलेटेड। तो ये दो सब मॉडल चलने की वजह क्या थी कि आईबीएम के आईबीएम के और यूनिक्स के एप्लीकेशंस इसके ऊपर रन हो, या रन करने की के लिए प्रोविजन होनी चाहिए। ये इसलिए दो मॉड्यूल्स डाले गए थे बाय विंडोज एनटी। बट विंडोज एनटी का भी सक्सेस बहुत ट्रिमेंडस हुआ, जैसे विंडोज 3.0 3.1 का हुआ, और तब आई आईबीएम पूरा कॉर्नर हो गई, और माइक्रोसॉफ्ट ये घर घर में फेमस हो गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया था। आई गेस विंडोज 7 तक था शायद ये, विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी तक था, भले ही ज्यादा यूज नहीं हुआ है ओएस बाय टू नाम का सब सिस्टम। ये भी शायद एक्सपी के पहले या एक्सपी के वक्त ही ये भी निकल गया था सब सिस्टम। और ये इसलिए निकाला गया था कि दो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट में आने वाले थे, या माइक्रोसॉफ्ट के ओएस के ऊपर आने वाले थे। उसमें का एक प्रोजेक्ट था सिगविन। अभी अभी भी हम डब्ल्यू से बाहर नहीं गए, रादर हम जो भी कुछ देख रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि डब्ल्यू मतलब क्या। ठीक है, डॉकर बहुत दूर तक छोड़ के आए हम। डॉकर ने डब्ल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी क्यों बनाई, इस क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे हैं, राइट? और ये आंसर ढूंढने के लिए हमको जाना पड़ रहा है विंडोज एनटी।
विंडोज एनटी का थोड़ा बैकग्राउंड देखा, राइट? तो विंडोज एनटी में अभी यूडब्ल्यू भी नहीं है, शायद यूडब्ल्यू हम फुल फॉर्म थोड़ा सा गूगल कर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। विल जस्ट शो यू यूडब्ल्यू विंडोज एनटी। हाँ, यूनिवर्सल नहीं, ये नहीं, यूनिक्स एप्लीकेशन, सॉरी एस यू करके था उसमें, सुआ, एस यू। सो लेट्स लेट मी चेक दिस। सबसिस्टम फॉर यूनिक्स, हाँ, सुआ। सो सी दिस इज कब तक था ये? विंडोज 7 तक था, रादर विंडोज 8 तक था। किसके लिए था? अलाउिंग कौन से एप्लीकेशन? यूनिक्स बेस्ड एप्लीकेशन। उसका नाम एस यू ए था, राइट? बट एस यू ए के बहुत सारे चैलेंजेस थे। इट वॉज फेल्ड प्रोडक्ट। जिस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए था उस हिसाब से एस यू ए चला नहीं। एंड बाय दैट टाइम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर दो दो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर की एंट्री होने वाली थी, और उनका नाम है बेसिकली, दीज वर द प्लेटफॉर्म सिगविन एंड मिन जी डब्ल्यू। तो जो सुआ था, सबसिस्टम बेस्ड यूजर एप्लीकेशन और यूनिक्स एप्लीकेशन, राइट? वो सुआ रिप्लेस हुआ, या वो सुआ रिप्लेस होने के लिए ये दो एप्लीकेशंस की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन। मैं ज्यादा इस पे अभी फोकस नहीं करूंगा, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स है जो समझना बहुत जरूरी है। तो पहली बात, सिगविन और मिन जीडब्ल्यू करते क्या है? अगर अगर मैं मैं बैश टाइप करता हूँ, आइडियली बैश, देखो, विंडोज में मैंने बैश टाइप किया है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विंडोज में मैंने बैश टाइप किया, रादर इसने भी अंदर से डब्ल्यू सी को कॉल की, ठीक है? ये एग्जांपल बराबर नहीं, एक काम करते, विल स्टार्ट गिट बैश जस्ट टू प्रूव सम पॉइंट। तो गिट बैश, ये देखो, ये प्रॉपर रन हो रहा है विंडोज के ऊपर। यहाँ पे अगर आप टाइप करते हो CLS, अब CLS कमांड किसका है? CLS कमांड ये विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट का है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, राइट? सो और LS, अगर मैं LS करता हूँ तो चल रहा है, राइट? मैं PWD करता हूँ तो लुक एट द वे इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्टरी, राइट? स्लैश माने रूट, और उसके ऊपर उसने सी नाम का पार्टीशन किया, राइट? सो ये जो बना है, ये किसमें बना है? लुक एट दिस, मिंग डब्ल्यू। तो ये लाने की जरूरत क्या थी कि विंडोज तो पॉपुलर हो रहा था, विंडोज जो पॉपुलर हो रहा था वो पॉपुलर होता रिटेल मोड में। रिटेल मोड में मतलब कंज्यूमर बेस। जब आज हम सामान कोई खरीदते हैं तो हम जिस कैटेगरी में आते हैं, हम आते हैं रिटेल कैटेगरी में। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, तो विंडोज वेयर डूइंग सुपर फैंटास्टिक ऑन दिस पार्ट। बट वो कहाँ पे फेल होता? वो फेल होता सर्वर बेस पे। सर्वर बेस इकोसिस्टम पे कोई विंडोज को लेने के लिए तैयार नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, डेवलपर कम्युनिटी में विंडोज वॉज लैकिंग।
क्यों? क्योंकि डेवलपर जनरली एप्लीकेशन सर्वर बेस करते थे और सर्वर बेस में लिनक्स और यूनिक्स ही टॉप मोस्ट पे था। तो अब दिक्कत क्या हुई थी, ये डेवलपर जिस कंपनी में काम करते थे, उनके जो डेस्कटॉप थे या उनके जो लैपटॉप थे, अगर 2005 के बाद की बात करें, तो वो सारे विंडोज बेस्ड थे। अब विंडोज को क्या चाहिए था कि हाउ आई कैन गिव दिस दिस एक्सपीरियंस, कौन सा? ये कमांड लाइन वाला इंटर एक्सपीरियंस जो नॉर्मली लिनक्स डेवलपर को अच्छा लगता है। सो मोस्टली लिनक्स जो डेवलपर्स है, दे वर्क ऑन बैश या टीमक्स। मेरा उतना लिनक्स का नॉलेज अच्छा नहीं है। आई पूरा एक्सपीरियंस मेरा डॉट नेट में होने के कारण मेरा पूरा काम विंडोज बेस्ड है। बट सिंस आई नाउ आई लर्न बिट ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग, तो मुझे पता है कि डेवलपर आर मोस्टली इनटू द, उनके डेवलपर के टूल्स बोलो, उनके कमांड लाइन बोलो, बिल्डिंग द एप्लीकेशन बोलो, जावा, डॉट नेट, पाइथन, सारी लैंग्वेज, ये डेवलपर इज ऑलवेज वर्किंग ईदर ऑन लिनक्स और ऑन मैक। तो इन सारे डेवलपर की कम्युनिटी को माइक्रोसॉफ्ट पे कैसे लाया जाए, इसके लिए ओपन सोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ने हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू किया, स्पेसिफिकली ऑन मिंग डब्ल्यू एंड या इन इन जैसे इनिशिएटिव्स को माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सपोर्ट किया। इनमें से एक था मिंग डब्ल्यू और दूसरा था सिगविन। दोनों अपने हिसाब से बहुत सही है। मुझे पर्सनली सिगविन इज माय पर्सनल चॉइस, क्योंकि दोनों के आर्किटेक्चर में बहुत फर्क है, राइट? अभी आइडियली आपको ये सवाल पढ़ना चाहिए कि ये जो एलएस मैं कर रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी कर रहा हूँ, ये तो लिनक्स की कमांड है, ये माइक्रोसॉफ्ट में रन कैसे हो रही है, राइट? तो उसके लिए क्या किया गया, मिंग डब्ल्यू ने मिंग डब्ल्यू ने जितने भी प्रोग्राम्स थे, ऑल द प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स थे मिंग डब्ल्यू ने, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। एलएस नाम की कमांड है, बाद में सीएमडी नाम की कमांड है, सॉरी सीएमडी, पीडब्ल्यूडी नाम की कमांड है, बाद में इको नाम की कमांड है, राइट? बाद में कैट नाम की कमांड है। जो कॉमन कमांड्स हम यूज करते हैं, मे बी सीपी, एमवी, मुझे सारी कमांड पता नहीं, बट दिस इज द कमांड्स वी जनरली इंटरैक्ट विद इन लिनक्स वर्ल्ड, राइट? और इवन बैश। तो ये सारी जो कमांड है, हम हम मतलब डेवलपर्स लोग इंटरैक्ट नॉर्मली लिनक्स विद दीज कमांड्स, राइट? तो ये जो कमांड्स का सोर्स कोड है, जो भी सारे कमांड्स है, राइट, 11 प्रोग्राम्स, तो इन सारे प्रोग्राम्स का सोर्स कोड, तो आई विल जस्ट ड्रॉ हियर source code of this all command recompiled into Windows based tools. I should type now. Recompiled from, so इनको फिर से कंपाइल किया गया on Windows based tool chain. For example, cl.exe, और फिर उनको फिर से लिंक किया गया and then it becomes ls.exe, pwd.exe, eco.exe. So basically सोर्स कोड लेके, इनका सोर्स कोड लेके दे हैव कन्वर्टेड इनटू द एक्जीक्यूटेबल फाइल्स। ये अप्रोच किसने लिया? ये अप्रोच मिंग डब्ल्यू का लिया। ये अप्रोच मिंग डब्ल्यू ने लिया कि सारे प्रोग्राम का सोर्स कोड लो, यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स, यूनिक्स इज इनिशियली ओपन सोर्स था वाया बीएसडी, तो इन सबका सोर्स कोड लो, कंपाइल करो विंडोज में और फिर यूज करो। तो ऐसे जितने भी एप्लीकेशन थे वो सारे यहाँ पे आए, राइट? मैंने कहा था कि सिगविन ने कुछ तो भी अलग किया। तो सिगविन का अप्रोच बहुत ज्यादा यहाँ पे आर्किटेक्चर मेक करता है। सिगविन ने कहा कि मैं हर कोड को लेके उसको कंपाइल करके अगर लाते बैठूं, तो देन इट वुड बी अ टू मच डंटिंग टास्क।
क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि विदाउट टचिंग द सोर्स कोड, अगर हम डायरेक्टली ये जो लिनक्स में बने हुए प्रोग्राम्स है, मीन्स उनके बाइनरीज, अगर हम विंडोज पे लेके आते हैं और विंडोज के ऊपर एक एब्स्ट्रक्शन लेयर बनाते हैं जिसका नाम है sigwin.dll। जिन लोगों ने विंडो किया है, दे मस्ट दे शुड रिमेम्बर कि डीएलएल हुकिंग नाम का एक कंसेप्ट सर लेते थे। डीएलएल हुकिंग बेसिकली इंजेक्टिंग डीएलएल बेस्ड ऑन द कौन सा एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो। तो कोई एप्लीकेशन रन करने से पहले यू कैन इंजेक्ट डीएलएल, इसको हुक्स बोलते हैं कि एप्लीकेशन रन हो रहा है, किसी को कुछ करना है क्या। सो टाइपिंग बेसिकली दिस ऑल्सो काइंड ऑफ इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर या कॉल बैक मैकेनिज्म। तो डीएलएल हुकिंग क्या करता था, कोई प्रोग्राम रन होने से पहले मुझे उस एप्लीकेशन को इंटरसेप्ट करना है क्या। सिग्विन हैज टू डू, सिग्विन हमेशा आपके रैम में बैठी थी, या अगर आपने कोई भी लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन रन किया, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्विन ने सोर्स कोड लेके फिर से कंपाइल नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली बाइनरीज लेके आए। जो बाइनरीज से जो बाइनरीज का मैजिक था ELF, राइट। देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटेबल्स, एक है एग्जीक्यूटेबल लिंकेज फॉर्मेट और एक .exe। .exe किसका है, विंडोज का है। तो लिनक्स से सारे प्रोग्राम्स लेके आए जो भी इसेंशियल्स थे, और वो प्रोग्राम डायरेक्टली विंडोज पे रन हुए। बट लेकिन यहाँ पे क्या था, सिंस मैजिक नंबर इज डिफरेंट फॉर लिनक्स बेस्ड बाइनरीज, इन्होंने क्या किया, जब भी कोई ऐसा ELF वाला प्रोग्राम आएगा तो sigwin.dll उसको इंटरसेप्ट करेगी। एंड देन sigwin.dll के अंदर लॉजिक था। लॉजिक क्या था, अगर मैं एलएस कमांड रन करता हूँ तो मुझे क्या दिखनी चाहिए, मुझे डायरेक्टरीज दिखनी चाहिए। मतलब क्या है कि मुझे फाइल ट्रैवर करना पड़ेगा, मुझे फाइल ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो फाइल ट्रांसफर के लिए या फाइल ट्रैवर्स के लिए जो भी कुछ सिस्टम कॉल है, किसके अंदर, लिनक्स के अंदर, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो सारे प्रोग्राम्स है ये लिनक्स के सिस्टम कॉल्स कॉल करते हैं। एंड दैट्स द रीजन मिंग डब्ल्यू को फिर से कंपाइल करना पड़ा, जिसकी वजह से EXE बने और वो विंडोज की कॉल करे। बट सिग्विन ने अप्रोच क्या किया कि ये सारे जो प्रोग्राम्स है इनके जो एग्जीक्यूटिबल्स है उनको यहाँ पे रन करवाओ, और अगर उन्होंने कोई सिस्टम कॉल लिनक्स को कॉल किया तो ये नंबर का सिस्टम कॉल विंडोज में कैसा है, ये ट्रांसलेशन लेयर सिग्विन करता था। तो सिग्विन का काम क्या था कि जो भी प्रोग्राम लिनक्स का कर्नल या सिस्टम कॉल कॉल करता था, उसने जो कॉल किया है उसका एनालॉगस या उसका सिमिलर सिस्टम कॉल विंडोज में कौन सा है, ये मैपिंग सिग्विन ने किया और प्रोग्राम्स रन होने लगे। आर वी ऑल विथ मी सो फार, यहाँ तक सब साथ में है क्या, जितने भी है। यस। सो दोनों के अप्रोच का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सिग्विन क्यों पसंद आया कि आपको हर बार फिर से कोड कंपाइल करने से होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपको जो जो असेंबलर रहता है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो विंडोज विंडोज का असेंबलर अलग रहेगा, लिनक्स बेस का असेंबलर अलग रहेगा। तो असेंबलर से जनरेट हुआ जो मशीन इंस्ट्रक्शन है वो स्टैंडर्ड नहीं है, एंड दैट्स द रीजन बिंग डब्ल्यू ने जो सोर्स कोड थे LS PWD कमांड्स या जितने भी इसेंशियल कमांड्स के जो सोर्स कोड थे वो फिर से कंपाइल करके लिंक किए विंडोज के एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में। इसीलिए बिंग डब्ल्यू चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। सिग्विन ने उसके ऊपर रैपर लिखा, सिग्विन ने विंडोज के ऊपर रैपर लिखा कि अगर कोई भी ELF बेस्ड बाइनरीज आपके पास आती है तो डू लेट मी नो। डू लेट मी मतलब मुझे कॉल करो, जैसा कॉल बैक, कि अगर किसी ने LS रन करने की कोशिश की तो वो फेल होगा, क्यों, क्योंकि LS के अंदर जो सिस्टम कॉल है वो विंडोज के साथ में मैच नहीं होगा, या विंडोज के पास वो होगा ही नहीं, और वो फेल ना हो इसीलिए LS ने जो सिस्टम कॉल कॉल किया है
ट्रैवर्स करने के लिए, मे बी एफ सीक हो या सीक हो, वो विंडोज के अंदर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल एलएस रन होने के लिए अगर आप लिनक्स में हो तो फॉर्क फॉर्क नाम का सिस्टम कॉल आएगा, राइट। बट विंडोज में क्रिएट प्रोसेस है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो ट्रांसलेशन है, वो ट्रांसलेशन सिगविन ने किया है इन द सिगविन डॉट डी। तो फिर दोनों के ड्रॉबैक्स क्या थे? दोनों के ड्रॉबैक्स ये थे कि मिंग डब्ल्यू ने जो किया उसकी वजह से क्या था कि अगर इन प्रोग्राम का कोई सपोर्ट या पैच या कोई बग फिक्स वर्जन आया या कोई इन्हेंसमेंट आया, तो फिर से कंपाइल करो और लिंक करो। ये सब साथ में है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। विंडोज के साथ ये मिंग डब्ल्यू के साथ में क्या था कि अगर ये जो इसेंशियल प्रोग्राम्स है इनमें अगर कोई बग फिक्स है, इनमें अगर कोई नए फीचर्स डालने हैं या इनमें कोई सपोर्ट देना है, तो सोर्स कोड मॉडिफाई होगा। तो सोर्स कोड मॉडिफाई हुआ तो क्या होगा? फिर से मिंग डब्ल्यू टीम को ये सारे एप्लीकेशंस फिर से कंपाइल करो। सोर्स कोड मॉडिफाई हुआ तो कंपाइलेशन फिर से करना पड़ेगा, फिर से लिंक करो और फिर से मिंग डब्ल्यू में लेके आओ। ये झंझट इधर नहीं थी। क्यों? डायरेक्टली लिनक्स के प्रोग्राम्स लेके आओ। बट फिर इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें दिक्कत ये थी कि अगर अगर नहीं, लिनक्स सिस्टम जब अपडेट होता है, राइट, हर हर ईयर में लिनक्स कर्नल अपडेट होता है। अभी कौन सा चल रहा है? 26.04 आएगा अभी, ये शायद आ गया होगा, आई डोंट नो, आ गया होगा शायद 26.04, फिर 25.04। तो ऑड नंबर आर बिल्ड वर्जन ऑफ लिनक्स ऑन, एंड इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबल, एलटीएस। तो इवन ईयर्स आर लॉन्ग टर्म स्टेबल। तो हर साल अप्रैल में लिनक्स का कुछ ना कुछ वर्जन आते रहता है। तो अगर उसमें कोई सिस्टम कॉल्स मॉडिफाई हुए, पैरामीटर चेंज हुए या नए सिस्टम कॉल ऐड किए, तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्यों? फिर उस केस में सिगविन डॉट डीएल में चेंज करना पड़ेगा कि इसमें ये तो इसमें ये। आई एम जस्ट गिविंग सम कंपैरेटिव स्टडीज। ये बहुत डेप्थ टॉपिक है, मुझे भी इसके बारे में पूरा नहीं है आइडिया। बट मुझे ये आर्किटेक्चर पसंद आया सिगविन का, कि उन्होंने सोर्स कोड मॉडिफाई करने से अच्छा, या मॉडिफाई मतलब रीबिल्ड करने से अच्छा, उन्होंने ये सोचा कि व्हाई नॉट क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्शन ऑन विंडोज जो लिनक्स से डायरेक्टली रीड करूंगा। बट इन दोनों के केस में भी चैलेंज था। दोनों के केस में चैलेंज क्या था, ये हम कल देखेंगे। आई विल टेक पॉज ओवर हियर। आई विल आस्क, बेसिकली आई विल लेट यू ऑल अनम्यूट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हो। आज यहीं पे रुकते हैं। ऐसा क्या चैलेंज था सिगविन और मिंग डब्ल्यू में, जिसकी वजह से फिर से डब्ल्यू एस एल पिक्चर में आया, विंडोज सब्सक्रिप्शन फॉर लिनक्स, राइट। डॉकर का इंस्टॉलेशन में डब्ल्यू एस एल नाम का प्री रिक्विजिट है, वो प्री रिक्विजिट को समझने के लिए हमको इतना टाइम देना पड़ने वाला है, राइट। अभी हम डॉकर के इंस्टॉलेशन में गई नहीं है, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग डब्ल्यू एस एल क्यों चाहिए प्री रिक्विजिट। यस, दिस वॉज अवर क्वेश्चन। और वो डब्ल्यू एस एल क्यों चाहिए, इसके ये समझने के लिए वी हैव टू कम फ्रॉम विंडोज एनटी का बैकग्राउंड। आर वी गुड सो फॉर? यस। एनी क्वेश्चंस? तो कल हम डब्ल्यू एस एल के बारे में देखेंगे कि उसने क्या सॉल्व किया है, ठीक है। और डब्ल्यू एस एल के बाद हम जाएंगे हाइपरवाइजर की जरूरत क्यों आप पड़ी, एंड देन फिर जाएंगे डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन का मीनिंग क्या है, बिकॉज दिस कंटेंट नो बडी विल कवर फॉर यू। डॉकर डेस्कटॉप का इंस्टॉलेशन, डॉकर एंड हेलो वर्ल्ड, यहाँ से चीजें स्टार्ट हो जाएगी। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं डॉकर, इन सब चीजों में ये डब्ल्यू एस एल पिक्चर में कहाँ से आया, हाइपर भी पिक्चर में कहाँ से आया, ये सब समझना पड़ेगा। दैट इज द रीजन वी आर चूजिंग दिस वे टू अंडरस्टैंड कि डॉकर डेस्कटॉप का आर्किटेक्चर क्या है। यस। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आज रुकते हैं। कल कल भी थोड़ा सा 8:30 को, मैंने टाइम 7 PM दिया है, बट आई थिंक 8:30 PM ही स्टार्ट करेंगे कल। आई हैव सम वर्क, तो 8:30 बजे कल स्टार्ट करेंगे। कल भी 2 घंटा, मोर देन इनफ, हम वहाँ पे रुकेंगे। कल का टॉपिक क्या रहेगा? फिर से कि डब्ल्यू एस एल की जरूरत क्यों आपको, राइट। वी आर लुकिंग इनटू डॉक्टर डेस्कटॉप।
Yes, all good. हा, लिंक वेगळी असेल मोस्ट लाईकली. पण तुमच्या त्या वर्कशॉप नावाच्या टॅबमध्ये येऊन जाईल. त्या वर्कशॉपच्या टॅबमध्ये येऊन जाईल तुम्हाला. ठीक आहे, चालेल. काही प्रश्न नसतील तर मग मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करतो. सध्या मला माहित नाही हे कधी येईल. कुबरनीज, हो, कुबरनीज वेगळा आहे. कुबरनीज समजण्यासाठी आपल्याला डॉकरचा अभ्यास करायचा आहे. रादर कुबरनेटिसला कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लॅटफॉर्म म्हणतात. ऑर्केस्ट्रेशन म्हणजे काय? ऑर्केस्ट्रेशनचं उदाहरण असं असं म्हणता येईल की खूप सारे म्युझिशियन्स एका सिंक मध्ये जेव्हा वादन करत असतात तेव्हा एक जण असा असा करत असतो, राईट? त्याला ऑर्केस्ट्रेटर म्हणतात. जो सगळ्यांना सिंक मध्ये आणतो, सगळ्यांवर लक्ष ठेवून असतो, सगळ्यांना मॅनेज करतो, राईट? तर कुबरनेटिस हा कंटेनर्सला मॅनेज करणार आहे, म्हणून त्याला कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लॅटफॉर्म असं म्हणतात. मग कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन समजायला मला कंटेनर म्हणजे काय हे कळलं पाहिजे. आणि कंटेनर म्हणजे काय हे समजण्यासाठी आपला हा जो प्रवास आहे डॉकरचा, मग डॉकरला डब्ल्यूएसएल का बरं पाहिजे, डब्ल्यूएसएल समजून घ्यावा लागेल. हायपर व्ही का बरं पाहिजे. सो फॉर दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड हायपरवायझर, व्हर्च्युअल एजंट समजून घ्यावं लागेल. अँड देन वी विल कम इन टू द ओएस पार्ट, की ओएस मध्ये असं काय वेगळं आलं, व्हॉट हॅज बीन चेंज इन टू लिनक्स कर्नल, ज्याच्यामुळे डॉकर उभं राहिलं, राईट? सो डॉकरची बॅच आय वुड से की खऱ्या अर्थाने स्टार्ट झाली आहे. मी आय बेसिकली मैं फ्री सेशन और ओपन टू ऑल सेशन में या पेड सेशन में आई एम नॉट मेकिंग एनी सेग्रीगेशन. जो सिलेबस का पार्ट है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है. एक सर्टन एंड पर हम रुकेंगे, और उसके बाद में जो इंटरेस्टेड है दे कैन कनेक्ट मी पर्सनली, एंड फिर उनको ही लिंक जाएगी जो डॉकर में फुल टाइम इंटरेस्ट हो. तब तक प्लीज वेलकम. जितना हम ओपन टू ऑल में सीखेंगे उतना सीखेंगे. एंड देन इफ आपको लगता है कि यू शुड बी लुकिंग डॉकर एज अ करियर, या करियर अपस्ट्रीम में डॉकर का आपको हेल्प हो रहा है, तो प्लीज वेलकम ऑन द डॉकर अल्टिमेट बैच. ठीक आहे, उद्या भेटूयाच. बाय ऑल. स्टॉपिंग द रेकॉर्डिंग.